Hello everyone, myself Fatima Singh, student of BA third semester RKG Educational College, Lucknow. Today I am going to discuss about nutrition in plants. So let's start. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पौधों में पोषण किस प्रकार होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition, also known as nourishment or ailment, it is the provision to cells and organisms of the material necessary in the form of food to support life. सभी जीवों को अपने आप को जीवित रखने के लिए और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन रखने के लिए फूड की आवश्यकता होती है और इसी भोजन की पूर्ति करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। The general requirement of all the living beings is energy, and common to all organisms. That is the requirement for energy and material, but it is fulfilled in different ways. लेकिन इसकी पूर्ति अलग अलग तरीकों से होती है। Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. All organisms require food to enable them to build their body, growth, repair damaged part of their bodies, and provide the energy to carry out life process. So, why food is required? Food is required by all organisms to enable them to build their body for their growth, for repairment of damaged body part, and for providing energy to carry out different life processes like digestion, respiration, etc. Components of food such as carbohydrates, protein, fat, vitamins, and minerals are called nutrition. हमारे भोजन में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। इन्हें ही हम पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। The way in which an organism takes and utilizes as its food is known as nutrition. So, in this slide, the mode of nutrition in plant is shown. There are two types of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic. And heterotrophic nutrition is also of four types, that is insectivorous, parasitic, symbiotic, and saprophytic nutrition. तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स self and trophos means nourishment. Plants are called autotrophs because they make their food themselves. प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं क्योंकि प्लांट्स ही केवल ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल फूड प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से। द मेकिंग ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और यही भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। सो इफ वी see what is autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms make complex food matter themselves from simple
one is called autotrophic nutrition. Apart from green plants, some bacteria and algae are also autotrophs because they can produce their food by themselves, which are known as blue-green algae. Now, photosynthesis, food making process in plants. अब जानते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं. So, photosynthesis is the process by which leaves make food with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight. During this process, carbohydrates are synthesized and oxygen is released. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स की ग्रीन लीव्स जिसमें कि क्लोरोफिल होता है सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके ये कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं. सो food and energy requirement of all autotrophic organisms are fulfilled by the process called photosynthesis. It is the process by which autotrophs takes in substance from the outside and convert them into stored form of energy. That is CO2, carbon dioxide, which is taken from outside, and water and sunlight, which is water and sunlight, which is taken from sun, and water from roots of the plant from the soil is taken by plants, and in the presence of sunlight, carbohydrate is synthesized and oxygen is also released in this process. Since the synthesis of the food occurs in the presence of sunlight, this process is known as photosynthesis. Means photo means synthesis. Photo means light and synthesis means to combine. The material are taken in the form of carbon dioxide and water, which are converted into carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. Carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. कार्बोहाइड्रेट का यूज प्लांट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट उस समय यूज नहीं होता है उसको प्लांट स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं. Starch serve as the internal energy reserve that can be used as and when required by the plant. और जब भी प्लांट को आवश्यकता होती है तो वो इस स्टार्च को यूज कर लेते हैं. Other organisms that can also photosynthesize include tiny green plants floating in water called plankton and some bacteria. We have seen tiny green plants floating in different water bodies, and these tiny plants are called plankton. They are also autotrophs because they can synthesize their own food with the help of photosynthesis, and some bacteria also do photosynthesis. The synthesis of food in plants occur in leaves. The leaves have green color pigment called chlorophyll. It helps leaf to capture the entire sunlight during the day. The energy is used to synthesize the food from carbon dioxide and water. So in this way, food is prepared by the plants. So there are different conditions which are required for photosynthesis, like some components, chlorophyll, water, carbon dioxide, and light. If we see the mechanism of photosynthesis in this image, that is 6CO2 plus 12H2
to will give 6 C6H12O6, that's 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen. So we can say that leaves are the food factories of plant. So we have understand that what is autotrophic mode of nutrition and how plants prepare their food with the help of photosynthesis, and how photosynthesis is done by plants by using outside um, carbon dioxide, water, and sunlight. So after autotrophic nutrition, the second mode of nutrition is heterotrophic nutrition. Many organisms cannot prepare their food on their own, unlike green plants. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं. These organisms utilize complex nutrients like protein, fat, and carbohydrates. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of their bodies. Such organisms are known as heterotrophs, depend directly or indirectly on autotroph for their survival. Heterotrophs mainly depend upon mainly depend on and indirectly or directly on autotroph for their survival. So, heterotrophic organisms include animals and fungi. Their mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. So, heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which the organism cannot synthesize its own food from simple organic compounds but rely on others for nutrition. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, बट वो इसके लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं. इट इज ऑफ थ्री टाइप. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक. पैरासिटिक न्यूट्रिशन. Parasites lives on or inside the body of another living organism called host. Parasite जो होते हैं वो किसी भी सेकेंड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड में पाए जाते हैं, जिसको कि हम होस्ट बोलते हैं. They absorb the food from the body of their host, और ये होस्ट की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दे मे डैमेज और इवन किल इट इन द प्रोसेस. और कभी कभी ये क्या करते हैं, इस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए ये उनकी बॉडी को डैमेज भी करने लगते हैं या फिर किल भी कर देते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म. Non-chlorophyll plants, viruses, and some fungi come under this category. पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है. कुछ नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स होते हैं जिनमें ये न्यूट्रिशन देखा जाता है. सम वायरसेस एंड सम फंजाई which show this type of nutrition. So, in the case of fungi, mycelium go deep into the tissue of host and secrete enzymes. पैरासिटिक न्यूट्रिशन अगर किसी एंजाइम में होता है तो उसमें माइसीलियम होस्ट की बॉडी में डीप पेनिट्रेट करके एंजाइम्स को सिक्रीट करने लगते हैं और इस प्रकार वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन involves living or inside other organisms, and they derive their food from usually
usually without killing them. Example like leech, cuscuta, hammerbear, pigs, lice, tapeworm, hookworm, and plasmodium. These all show this type of nutrition. So second is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition, taking dead, decaying organic matter in the form of food is called saprophytic nutrition. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए तो इस तरह का न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. Such organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. और इस तरह के ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को बॉडी के आउटसाइड में बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Examples are fungi like bread mold, yeast, and mushroom. Saprophytic organisms are mainly confined to bacteria and fungi. A few flowering plants like Neotia and Monotropha are also a saprophytic in nature. Yeast is an example of saprophytic fungi. So, saprophytic organisms mainly depend on dead and decaying organisms for their food. Symbiotic nutrition. What is symbiotic nutrition? Root nodule bacteria like rhizobia lives inside the root of leguminous plants such as peas and beans. जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं लाइक पी बीन्स उनमें उनकी रूट नोड्यूल में एक डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कि हम राइजोबियम कहते हैं. वो लेगुमिनस प्लांट के रूट के अंदर पाया जाता है. द लेगुमिनस प्लांट्स आर द होस्ट टू दीज बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट्स मेनली इन बैक्टीरिया के लिए होस्ट होते हैं. द बैक्टीरिया प्रोवाइड फिक्स नाइट्रोजन और ये बैक्टीरिया प्लांट्स को एक फिक्स अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं. द बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करता है. जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है उसको एमोनिया में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. The plants provide photosynthesis, that is glucose. और बदले में प्लांट क्या देता है? फोटोसिंथेसिस, that is glucose to these bacteria. So in heterotrophic nutrition, next is insectivorous plants. Insectivorous plants are mainly carnivorous in nature. Their leaves are modified to trap insects. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कार्निवोरस नेचर के होते हैं और इनकी लीव इस तरह से मॉडिफाई होती हैं कि ये ट्रैप को इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती हैं. Venus flytrap is an insectivorous plant that has leaves that are like boxes with hinges. और Venus flytrap एक insectivorous plant है जिसकी लीव्स boxes की तरह होती हैं with hinges and which can trap the insect very easily. They have long hair along the edges. When an insect touches the hair, the leaves snap shut, trapping the creature inside. जब भी कोई इंसेक्ट इसके हेयर को टच करता है तो लीव स्नैप हो जाती है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है. Pitcher plant. The right side image shows an image of pitcher plant. Pitcher plant leaves are in the form of
container or pitcher with a lid to cover the mouth. और पिचर प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कंटेनर या पिचर की तरह होता है जिसमें एक लिड होती है जो उसके माउथ को कवर करती है. Whenever an insect goes near to this plant, um, they usually trap the insect inside their structure. So we have learned about what is autotrophic nutrition and what are heterotrophic nutrition and what are the types of heterotrophic nutrition. So this was all about today. Thank you, sir.